Good evening, everyone. Good evening, sir. This PPT is visible to everyone. Yes, sir. It's visible. That's great. Okay, guys, let's start. I think only 6% here. Oh, as yesterday I told you about the lenses, and in lens there is a system called image stabilization system, and why we required it. So we'll discuss on it. Yesterday I told you there's a rule of thumb in photography. Whatever your focal length is, your shutter speed should not lesser than it. For an example, if you are using 50 mm lens, your shutter should not less than by 1 by 50th, right? So then here image stabilization system came. अब क्या है कि you can use laser shutter speed than your focal length. And now it comes in stop. You want a stop, 2 stop, or 3 stop. So you can read over there in PPT. The rule changes entirely once you add image stabilization system into the mix. Most modern IS system offer 3 to 5 stop of image stabilization, meaning where you once were theoretically limited to 1 by 200 of the second on 200 mm focal length, you can now shoot the same image at 1 by 30th of second. 4 stop of exposure. So basically it's totally depend upon the image stabilization system or your camera, how much stop that particular lens or particular camera is given. So 4 stop means suppose आप 200 mm use कर रहे हो. So if your camera have the 4 stop, so 1 stop क्या हो गया? 100, 2 stop is 50, 3 stop is 25, 4th stop is 13. It's not the 12 from 5, so 1 by 30th is there. So now you can shoot on 1 by 30th. आपका image blurry नहीं होगा, right? अगर आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं है at that point of time, there will be shaky image or blurry image. But अगर है तो it will work. Now here comes the now there's a two types of image stabilization system. One is lens-based stabilization system and another is sensor-based stabilization system. जो आपका लेंस बेस्ड है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक, ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, राइट. जो आपका सेंसर बेस्ड है, दैट इज फिजिकली आपका सेंसर शिफ्ट होता है बेसिकली. So if you guys have anyone have the mirrorless camera which have the on camera image stabilization system, so once you switch off your camera, I just try to shake your camera, you can heard a bit of sound over there. Because क्या होता है, whatever अगर जो movement आपका हो रहा है, to compensate those movement, सेंसर अपने आप को शिफ्ट करता है, राइट. सो इट्स द फिजिकली मूवमेंट ऑफ सेंसर, राइट. बट लेंस में क्या, इट्स इलेक्ट्रॉनिकली, देयर इज अ फ्लोटिंग एलिमेंट इनसाइड द लेंस, एंड वट एवर मूवमेंट दैट यू आर टेकिंग, उसके अपोजिट क्या करता है फ्लोटिंग एलिमेंट्स, आपके लाइट को या आपके मूवमेंट को स्टेबल कर देता है. सो दैट्स द इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम इन लेंस. Are aware of that there's a many brands, but the work is remains same to stabilize the image, right? For the Canon it's IS, for the Nikon it's VR, for Sony it's I think OIS,
For Panasonic, it's OIS, optical image stabilization. But the thing is, they will work remain same. It's totally depend upon the brand or brand का जो अपना होता है उसके according they choose the name, but impact इसका वही है. Now just see how lens-based image stabilization work. Now in this one, as you can see, light ray is totally straight, so it's look like the camera is on tripod, right? So there's a no movement, there's a no jerk at all. So you can see over here, there's a camera sensor, there's a focusing group elements, other optics. Between that, there's a IS group systems. ये fixed नहीं होता, it's a kind of floating element inside the lens होता है. So see another image in which now there's a jerk, downward jerk है, camera आपका नीचे जा रहा है, so there's a jerk. So see, the ray is straight? No. Have you seen this differences? Mouse का cursor दिख रहा है? See previous image. I said this one. Ray is bending. अब क्या कर रहा है? See the difference in first one. Second. Now see the correction. Now what happened? अभी क्या किया है that the floating element जो IS का जो लेंस है उसने क्या किया है बेंड किया है और कंपनसेट करके आपके रे को करेक्ट कर दिया है. So see the difference between second and third. Now is it a straight? Is there any confusion? ये line straight है when your camera is static. Suppose for an like tripod or something else. Now this one downward jerk हुआ and this one आपके एलिमेंट्स ने क्या किया जस्ट शिफ्टेड द रेज और लाइट को बेंड करके आपको स्ट्रेट इमेज लाइट स्ट्रेट कर दिया. सो देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल और कोई जर्क या ब्लर इमेज आपका नहीं आएगा. सेम थिंग विद द अगर अपवर्ड में कोई जर्क होता है उसमें भी यही करेगा, फ्लोट करके जस्ट शिफ्टेड द रेज. बट as I told you, there's a two types of systems. One is lens based, another is sensor based. So maybe in technically they can ask the question, what is the difference between and what's the advantage and disadvantage of this system? So let's talk on it. Lens based stabilization advantage. First is it's more effective on long telephoto, super telephoto lenses. The reason is if you guys have used the telephoto lenses, so angular view is compressed, बहुत कम होता है. So at that point of time, you shake your camera a bit. It's look like बहुत ज़्यादा जो है वो shake हुआ है camera. In wide angle lenses, you won't feel that things, but in telephoto, you can because the angular view is very narrow. At that point of time, what happened if the lens-based system is there? So वो अपने आप को bend करके ठीक कर लेगा. But for the sensor-based system, अब इतना भी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता. सेंसर डोंट लाइक द सेंसर डोंट हैव दैट मच ऑफ अ स्पेस टू शिफ्ट इट बिकॉज फिजिकली सेंसर इज शिफ्टेड, राइट? सो सेंसर डोंट हैव दैट मच ऑफ रूम टू फिक्स इट. सो दैट्स अ वन रीजन कि ऑन लॉन्ग टेलीफोटो लेंसेज ज्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा टू शिफ्ट योर रेज. सो दैट्स अ वन रीजन कि लॉन्ग टेलीफोटो पे इट विल वर्क. इफ यू कंपेयर विद द sensor based stabilization system, yeah, that's the advantage of it. Okay, lens stabilization is more effective in low light conditions. The reason is, you guys know that the autofocus system, right? So autofocus system, how it works? Through the lens, rays is coming. Now mirror पे जाता है. If the your like आपका optical viewfinder है, so there's another sensor for the focus. वहां जाता है, then it's given the information to the sensor. Now sensor instruct the lens to focus on a certain distance, right? So it takes time, right? So क्या होगा कि अगर सेंसर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है, so it take more time. बट इसमें क्या हो रहा है, लेंस बेस्ड आ रहा है तो ऑलरेडी इट्स स्टेबलाइज्ड, राइट? बट सपोज अगर नहीं है, सेंसर बेस्ड है ये, तो क्या होगा?
लाइट को पहले सेंसर पे जाना होगा, देन द ऑटो फोटो सॉरी ऑटो फोकस सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग. And in low light condition, your camera is keep hunting for focus. If you are using autofocus, I'm not talking about the manual focus, right? मैनुअल में चल सकता है. बट इफ यू आर कंपेयरिंग दोज थिंग्स, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहता है, सो दिस आर द आंसर्स. कि इन ऑटो फोकस कंडीशंस, बिकॉज इन ऑटो फोटो और ऑटो फोकस मोड, योर कैमरा इज कीप हंटिंग फॉर फोकस इन लो लाइट कंडीशंस, राइट? सो फॉर दैट रीजन, अगर लेंस ने पहले से स्टेबलाइज करके आपको इमेज दे दिया है, राइट, द पैटर्न ऑफ लाइट दे दिया है, सो नाउ इट्स इजी फॉर द कैमरा टू फोकस, राइट? बट ऑन सेंसर बेस्ड क्या होगा कि पहले सेंसर पे लाइट जाएगी, फिर वो ऑटो फोकस को देगा, पहले सेंसर खुद स्टेबलाइज करेगा, फिर देगा, सो इट विल टेक टाइम, राइट? सो दैट्स द मेन डिफरेंस. ना लेंस वेस्ट के और कुछ एडवांटेज है, लाइक कि अभी बहुत सारे लेंसेज में आ गए हैं कि एक्टिव मोड और many mode is over there. It's work like have you seen the if you guys have used autofocus mode, उसमें कुछ आ गया hybrid mode, राइट? कि इफ योर सब्जेक्ट इज इन ट्रैकिंग मोड, अपने आप एक्टिव मोड एक्टिवेट कर देता है, और अगर सब्जेक्ट स्टैटिक है तो दूसरा मोड एक्टिवेट कर देता है. जस्ट लाइक दैट बहुत सारे लेंसेज में ये आ गया है कि सपोज करो इफ योर कैमरा इज इन स्टैटिक और सडनली यू हैव टू मूव द कैमरा, नाउ द automatically your IS system start working. You don't need to activate it, right? And suddenly if you use tripod or static things, right, or you're using your camera on tripod, automatically your IS system will switch off. तो अब आए हैं ये सारी चीजें, बट पुराने जो लेंसेज है उसमें नहीं है. यू विल हैव टू टर्न इट ऑफ, राइट, मैनुअली, आपको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा. बट बहुत सारे नए लेंसेज में ये फीचर्स आ गए, सो दैट्स अ वन एडवांटेज यू कैन ऐड ऑन. ओके, चलिए कुछ डिसएडवांटेज है. नो, देयर इज आल्सो, इफ देयर इज एडवांटेज देयर विल बी डिसएडवांटेज. कि डिसएडवांटेज क्या है कि suppose karo you are using your camera on tripod, you forget to the turn it off, that the image stabilization system. Maybe your camera is a static mode, your camera is a static mode, but there is a floating elements, there is a elements inside the lenses. Your camera is a static, the light ray will hunting your sensor, sorry, coming towards your sensor. So what happened, that system start working. वो कुछ ना कुछ तो करेगा, बिकॉज इट्स ऑन, वो स्विच ऑन है आपका, ऑफ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सर्च करेगा, कुछ भी इधर उधर करेगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है. सो व्हाट हैपन, मे बी समटाइम्स आपका इमेज ब्लरी हो सकता है इवन इट ऑन स्टैटिक मूवमेंट. सो दैट्स अ रीजन, कहते हैं जब भी आप ट्राइपॉड यूज करें या कुछ स्टैटिक चीजें यूज करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट टर्न इट ऑफ, आप उसे ऑफ कर सकते हैं. और क्या न्यू एडवांटेज रिक्वायर अपडेटिंग लेंसेज. तो वो नॉर्मली है कि आपको क्या कहते हैं फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, कुछ नया मार्केट में आया है तो इट्स सिंपल कि आपको जाके अपडेट करना पड़ता है एज अ फर्मवेयर अपडेट. Annoying loud sound when IS is engaged. It's simple, if there's any elements inside the lens, obviously अगर वो वर्क करेगा तो साउंड करेगा. जस्ट लाइक आपने देखा होगा ऑटो फोकस मोड जब आप यूज करते हो या फोकस आप करते हो, ऑटो फोकस यूज करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक साउंड, अनोइंग साउंड प्रोड्यूस होता है बेसिकली. चाहे आप एसटीएम यूज करो, आप यूएसएम यूज करो, यू विल हर्ट दैट साउंड. सो सेम थिंग विद द लेंसेज, इफ यू आर यूजिंग आईएस सिस्टम, थोड़ा सा साउंड तो प्रोड्यूस होगा. सो इफ यू कंपेयर विद द सेंसर बेस्ड स्टेबलाइजेशन, उसमें नहीं होगा, बहुत स्मूथली वो शिफ्ट होता है. फिजिकली शिफ्टिंग, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, वो फिजिकली शिफ्ट हो रहा है. सो देयर विल बी लेस साउंड, और यह साउंड आपको पता भी नहीं चलेगा, बट इसके साउंड आपको सुनाई दे सकते हैं. ओके, और इसका है कि इफ यू आर द एज सिस्टम ऑन, तो ये बैटरी लाइफ भी आपका ड्रेन करेगा, बैटरी भी कंज्यूम करेगा. दैट्स वन डिसएडवांटेज.
एक और चीज है इसका जो डिसएडवांटेज है, आपके बुके को कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा, डिग्रेड द बोके क्वालिटी, राइट। बिकॉज लाइट जो आ रही है, जैसी लाइट आपके डायफ्राम से क्रॉस कर रही है वैसा वो रहेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजेशन सिस्टम। वो थोड़ा बहुत लाइट के साथ, लाइट के एंगल के साथ मैनिपुलेशन होता है, तो मे बी बोके पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, नॉट दैट मच बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है इफ यू आर कंपेयरिंग, राइट, लिख रहे हो तब। नॉर्मली किसी को पता नहीं चलने वाला कि आपके बोके को कितना डिग्रेड किया है विद स्टेबलाइजेशन एंड विदाउट स्टेबलाइजेशन। कंपेयर करके बहुत ही डिटेल में जाओगे देन यू कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ थोड़ा सा जो है वो द बिट डिफरेंस once you are using IS system. See the bokeh once, just turn it off and then check it out. The bit differences in terms of bokeh. Okay. अब क्या ऑन कैमरा बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम में ये बता देता हूँ हाउ इट वर्क पहले, then we'll discuss on it. Now see, same thing. It's a static camera, is a static right now. Same image. Now see, वही jerk है, the camera is downward. फिर कैमरा शेक है, आपका लाइट जो है यहाँ पर बैंड हुआ है. Now see in this one what happened. रे देखिए कहाँ पर है. इसने क्या किया, सेंसर शिफ्ट कर दिया. एंड दिस वन सेंसर शिफ्टेड. सेंसर जैसे ही शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, लाइट की रे स्ट्रेट हो गई है. सो वो शेक जो है आपको दिखाई नहीं देगा. उसमें क्या हो रहा था बेसिकली इन द लेंस बेस्ड सिस्टम, उसके जो ऑप्टिक्स थे, जो एलिमेंट्स थे वो शिफ्ट हो रहे थे. इन दिस वन वो रे को शिफ्ट कर रहा था. ये क्या कर रहा है, सेंसर अपने आप को शिफ्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रे. सो क्या हो रहा है, जो भी जर्क आ रहा है वो मिनिमाइज हो जा रहा है. See. Now the advantage of this one is because every time you are not using the same lenses, right? You have to use series of lenses. So for that purpose, you need every lens must have the image stabilization system. And one disadvantage of it, if any lens have the IS system, आपको क्या करना, you have to pay more for it, right? So every lens become costly basically, right? But at once you purchase the camera which have in body image stabilization, now you can use any lenses, right? Any cheaper lenses जिसमें कि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं भी होगा तो चलेगा, राइट. अदरवाइज अगर आपका ऑन कैमरा इन कैमरा इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं है, नाउ यू हैव टू परचेज many lenses which have the image stabilization system. That's the one advantage basically. The same thing, work with all lenses, one time cost. Camera upgrade versus lens upgrade. Once the upgradation will come, any firmware will come, you have to come once with the camera, but if you have the multiple lenses, सारे लेंस को अपग्रेड आपको करना पड़ेगा. स्मॉलर, लाइटर एंड चीपर लेंसेस. अभी क्या होगा, ड्यू टू दैट सिस्टम, दैट एलिमेंट्स, आपका लेंस हैवी होता है बिकॉज लेंस के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे तो द लेंस बिकम बिट बल्की. सो अगर विदाउट वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं या विदाउट आईएस सिस्टम कोई लेंस लेते हैं, तो आपका जो लेंस है ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लाइटर होगा इन कंपेयर टू अनदर लेंसेज विच हैव द आईएस सिस्टम. नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोके, या बिकॉज लाइट तो वहां से सीधी आ रही है, आपका सेंसर हो रहा है, तो जो भी लेंस से चल रहा है तो ऑलरेडी दे फिक्स इट अप. नो अनोइंग लॉर्ड साउंड. ऑब्वियसली आपका सेंसर शिफ्ट हो रहा है तो इतना ज्यादा साउंड नहीं करेगा. Disadvantage, less accurate metering and air performing low light situations as earlier we have discussed.
not very effective for long telephoto, super telephoto lenses. It's very simple. Long telephoto or super telephoto lenses have, they have to shift more, और उतने ज्यादा rooms नहीं होते कि sensor आपका बिल्कुल up down हो जाएगा. There's very little space for that to shift the sensor. So long telephoto पे काम नहीं करेगा, low light situation में काम नहीं करेगा. That's a disadvantage. अब क्या होता है, कई लेंसेज जो पहले वाले कुछ कैमरे थे जब स्टार्टिंग में आया था, there's a 3 axis, the 4 axis or 5 axis. Now you can see the what is 5 axis is. The camera can slide up or down. That's the y axis. कि कैमरा अप एंड डाउन में कुछ डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड हुआ. फॉर दैट मोमेंट आपका एक स्टेबलाइजेशन, एक एक्सिस ये हो गया. अनदर एक्सिस द कैमरा कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट. पेन वाला एक्स एक्सिस जो आपका हो गया, द कैमरा कैन रोटेट अराउंड द लेंस, जो आप गिम्बल में कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, just forget that kind of movement. It's called समझ लो आर्क बना रहे हो, that kind of movement is there, right? The camera can tilt up or tilt down. Pitch, the camera can tilt left or right. Yeah, suppose the tilt up or tilt down is different things, right? ये जो yaw है, it's tilt up on left. Suppose करो ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है कैमरा, right? ये सिर्फ एक पार्ट से टिल्ट हो रहा है, और सिर्फ either it's the left or either it's the right side. किसी एक पार्ट से हो रहा है, that's the yaw. So there's a 5 axis. Maybe some camera have a 3 axis, some have the 5 axis. So it's depend upon the manufacturer. I can see here. Yeah, that's called roll. I just forget the name. Say to it. So now it's more clear. Abhi confusion is now, say this one. Y-axis, x-axis, what is yaw? What is pitch? Now, is it clear? So that's the IS system. Now, anyone have any questions you guys can ask related to this topic? Otherwise, we'll continue with another one. Anyone have any doubt? You can ask right now. No doubt? So let's start with another one. So now is the another PPT is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you guys don't have any questions in previous topics, the IS system, no? Is that clear? Yes, sir. Okay, that's okay. Give me one second. Give me 1 second.
Okay, guys. Now another topic is distortion. It's related to lens too. So basically, what do you mean by distortion? बताओ कोई. The normal, not in terms of like lens only. What is distortion? Which doesn't look very normal to the human eye. Then It's look very. stretched, somewhat stretched. Basically, agar in terms of, not in terms of lens, normal, if you're using a word like distortion, it means to change or to alter the actual shape of anything, right? That is distortion, right? Suppose किसी का जो actual shape है, this is look straight, this plane is look straight. If it appear curve, right? So that's a distortion, right? जो इसका actual shape है उसे distort कर रहे हो ना, alter हो रहा है ना उसका shape. तो पेन का जो शेप है दैट इज स्ट्रेट, बट इसको क्या कर रहे हो तुमने, कहीं से कर्व कर दिया. अब तुमने थ्रू द लेंस हो रहा है, दैट्स द लेंस डिस्टॉर्शन. मैं खुद से करूंगा, मेरे द्वारा क्या हुआ डिस्टॉर्शन होगा. सो एनी काइंड ऑफ, बेसिकली इट्स द अल्टरेशन इन द द शेप ऑफ एनीथिंग, बेसिकली द शेप. कि कोई भी शेप को अगर अल्टर कर रहा है, और डिफॉर्मेशन ऑफ इमेज, डिफॉर्मेशन वर्ड इज राइट वर्ड बेसिकली. ये डिफॉर्म हो रहा है, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं. सो दैट्स द distortion basically. And when you are using optics in terms of, so in terms of camera, so there's a two kind of like distortions coming. One is perspective distortion, another is optical distortion. Optical distortion, it can be minimized. Optical distortion minimize हो सकता है, but आप हटा नहीं सकते, right? पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन इज मैनेजेबल, उससे आप मैनेज कर सकते हैं. तो बेसिकली ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन से पहले मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ. यू गाइस आर यूजिंग योर फोन, राइट? मेनी टाइम्स फोन से फोटो खींचते हो. इफ देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस, you won't feel there is something that have been changed. But when you are taking your camera closer to the character, what you feel? The nose, see the eyes or ears, just look bit stretched. Have you feel that? होता है कई बार जब कैमरा बहुत नजदीक लेके जाते तो होता है, see the nose, ears. That's the Yes. that's not the optical distortion, that's the perspective distortion basically, because you are getting too closer to the characters, right? So that's basically the perspective. It's your camera things, right? That's a perspective distortion, that's not the optical. है ना? वो optical distortion नहीं है. Optical distortion is caused by your optical design of your lenses. That's the reason optical distortion caused, जिसको कि हम कहते हैं lens distortion. Or if you guys are using any softwares for your Photoshop editing, like Lightroom or Photoshop or Magic Lantern, कोई भी use कर रहे होगे, any one of you, you can see in that software, especially वहां पर होता है distortion को minimize करने के लिए, I just forget the name, जहां आप डिस्टॉर्शन को करेक्ट कर सकते हैं. ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन को, नॉट द पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन. इसका मतलब ना पर्सपेक्टिव होगा वो भी हो जाएगा, ऑप्टिकल जो डिस्टॉर्शन है उसको करेक्ट कर सकते हो. ना समवन कैन आस्क मी कि नहीं पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है, वो नहीं हो सकता. हो सकता है बहुत सारे इमेज को आप काट दो, देन इट विल बी. बट ऑप्टिकल में ऐसा नहीं, ऑप्टिकल में भी कटता है बट नॉट दैट मच, राइट? सो ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है, एंड इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन लेंस टू लेंस, ऑप्टिक्स टू ऑप्टिक्स, राइट? द चीप लेंसेज हैव द मोड. जो सस्ते लेंसेज हैं उसमें देखोगे ये ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, द स्ट्रेट लाइनर अपीयर कर्व्ड और द डिफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स. बट जो महंगे लेंसेज होते हैं लाइक द सिनेमा लेंसेज, इन एवरी लेंसेज एवरी ऑप्टिक्स हैव डिस्टॉर्शन. ये ऑप्टिक्स का नेचर ही है ना, ये ऑप्टिक्स का नेचर ही है कि डिस्टॉर्शन होगा. बट द थिंग्स इज दैट इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, राइट? सो इट्स डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर हाउ दे वर्क ऑन इट. तो देखो सिनेमा लेंसेज में इतने ज्यादा नहीं, दे आ रही है स्टिल यूजिंग 14 mm 16 mm, बट इतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा. बट तुम किसी अपने फोटोग्राफिक कैमरे पे जस्ट ट्राई टू यूज 12 mm and 16 mm, you can see how much it is distorted, right? So it's totally depend upon how they design it, how they manufactured it, right?
क्योंकि these are the cheap lenses, तो इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता. It's only about कि how to capture it, कि चलो 12 mm में दिख गया, that's it. So here it is. So in optical distortion, there's a two type of distortion, that is pincushion and barrel distortion. One is barrel distortion, another is pincushion distortion. जो barrel distortion है, commonly it will seen in the wide angle lenses. जो pincushion है, ये समझ लो कि it's just the exact opposite of barrel, so it means it will be in telephoto lenses, right? तो उसमें जैसा दिखेगा उसका ठीक अपोजिट आपको pincushion में दिखेगा. So basically barrel distortion is a factor of wide angle lenses, and the pincushion distortion is the factor of like telephoto lenses. Sure. Barrel distortion होता कैसे और appear कैसे होता है, right? As you guys know that how our sensor is rectangular, right? Our sensor is rectangular and our lens is spherical, right? Our lens is spherical, our sensor is rectangular. So what happened कि हमारे सेंसर का भी एक फील्ड ऑफ व्यू होगा. Sensor also certain area, suppose करो कि 36 by 24 or whatever the size of your sensor, that particular sensor have the field of view. Exactly कोई होगा ना इतना एरिया तक ये कैप्चर कर सकता है. So that particular sensor have the certain field of view and the lens also have the certain field of view, है ना? So होगा क्या, ये जो field of view है, if it wide angle have lenses have the greater field of view. So if your lens have the wider field of view than your sensor, right? So then there is a barrel distortion caused, right? कि आपका सेंसर ऐसा है और आपने लेंस लगाया कुछ वाइड एंगल का बहुत बड़ा लेंस लगाया है जिसका फील्ड ऑफ व्यू इज वाइडर देन योर सेंसर, देन इट विल कॉज barrel distortion, right? और पढ़ लेते हैं इसे. When straight lines are curved inward in a shape of barrel, बड़ा सिंपल है. जब आपके सेंसर के अंदर लेंस का फील्ड ऑफ व्यू तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है क्रॉप हो जाएगा, राइट? कि क्रॉप सेंसर वाली बात नहीं है. जो भी एंगल उसे दिख रहा है, वट एवर द फील्ड ऑफ व्यू दैट इज कैप्चर्ड बाय दैट पर्टिकुलर लेंस, वो तो आएगा ना, वो तो आएगा. सपोज कई बार क्या होता है, आप देखते हो फील्ड ऑफ व्यू तो आता है बट आपकी इसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो विग्नेट अपीयर होता है. हैव यू सीन द विग्नेट? अपीयर होता है ना विग्नेट सा ब्लैक सा कुछ, right? Yes, sir. Yes, sir. So the things is that कि field of view is a smaller. Now क्या करना होगा, because लेंस तो कैप्चर कर रहा है, so क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन जो कॉर्नर की चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा टू सेट इट ऑन सेंसर, कि सेंसर के फील्ड ऑफ व्यू में मैच करने के लिए. तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व होंगे और कर्व ऐसे इसी शेप में होंगे, बिकॉज द रीजन इज आपका जो लेंस है वो क्या है, वो स्फेरिकल है. रेक्टेंगुलर लेंस नहीं है कि स्ट्रेट लाइन को ऐसे सीधा खींच देंगे, क्योंकि वो है तो ऐसे ही वो कर्व आएगा अंदर की तरफ, अपने आप को सेट करेगा. द रीजन द फील्ड ऑफ व्यू इज बिगर देन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ सेंसर. क्या commonly seen on wide angle lens, barrel distortion happens because the field of view of the lens is much wider than the size of the image sensor, and hence it needs to be skewed to fit. As a result, a straight line are visibly curved inward, especially towards the extreme edge of the frame. Obviously सेंटर का तो आ ही रहा है फील्ड ऑफ व्यू, तो स्ट्रेच कौन सा एरिया हो रहा है, जो कॉर्नर का है, जो एक्सट्रीम एजेस हैं, राइट, दैट एरिया, उस एरिया को क्या करना होगा, सेट करना होगा. सो दैट्स द रीजन उसे अंदर खींचना होगा. एक एग्जांपल देखते हैं, देन विल डिस्कस ऑन द पिनकुशन डिस्टॉर्शन. जस्ट सी इट गाइस. Now you can see
स्ट्रेट लाइन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है? एक्सट्रीम एजेस पे, राइट। और एक्सट्रीम एज को क्या कर रहा है, ये इनवर्ड की तरफ खींच रहा है, राइट, कर रहा है ना। सीन इमेज ना, एक इमेज देख लेते हैं, राइट। क्या लग बैंड लग रहा है, जो एजेस हैं वो see to this area, see how much curve it is, this one. Now in some software just corrected it. We've seen the difference, क्या हुआ इसमें? Sir, can you show the ऊपर वाला image Previous section? one, yeah, sure, Yeah. why not? Let's say this one. Sorry, yes, sorry. दिखाओ second one. Yes, sir. You want to compare it, now just take a screenshot in your phone, capture a photograph and now match it with this one. अगर कोई confusion हो रहा है ना, do one thing, एक फोटो क्लिक कर लो प्रीवियस वन का, राइट, बिकॉज मैं दोनों को एक साथ नहीं ला सकता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी ये बना हुआ है। Sir, edges पे distortion है थोड़ा, देख motion लीजिए, फोटो distortion. क्लिक कर लेना गाइस, डू वन थिंग ना, क्लिक अ फोटोग्राफ, क्लिक अ फोटोग्राफ, देन अपने डिस्प्ले के पास जब मैं सेकंड इमेज लाऊंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने फोन को रखना एंड दिस इमेज टू। कर लिया? Yes, sir. नाउ कंपेयर इट। Yeah, the edge lines are looking more straighter. Yeah, so it's corrected in post basically. So there's a certain features in the whatever the software that they are using, उसमें क्या हो रहा है, उसे वो स्ट्रेट कर दे रहा है। बट मीनवाइल जस्ट सी बोथ ऑफ इमेजेस, ये इमेज थोड़ा क्रॉप भी हुआ है। Yes, sir, edges crop किया है जहाँ पे motion क्रॉप किया है ना blur थोड़े हो से, रहा है. थोड़ा सा क्रॉप होगा, अगर ये होगा तो थोड़ा सा क्रॉप होगा। जस्ट लाइक ना, कई कैमरा ना वो इमेज स्टेबलाइजेशन का प्रोसेसिंग देता है, राइट, तो वो ना हल्का क्रॉप करके निकालता है, वीडियोस करता है ना, बहुत सारी इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम का देखोगे रहता है, ये प्रोसेस कर देता है। सो बेसिकली दे क्रॉप दोस थिंग्स, ऊपर से जैसे ही क्रॉप होगा थोड़ा स्टेबल, तो सेंटर का आपको ऑलरेडी लगेगा ना, राइट। सो दैट्स द थिंग्स, बट या इट वर्क। कि प्रीवियस इमेज देखोगे, ये देखोगे, तो दोनों में डिफरेंसेस ऑब्वियसली हैं। बहुत ज्यादा कर्व लग रहा है। सो बेसिकली ये क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, दैट अपीयर कर्व, राइट, वो सारे नहीं होगा, सेंटर लाइन विल नॉट अफेक्टेड, ओनली जो आपको एक्सट्रीम एजेस होते हैं दैट विल बी अफेक्टेड ऑन एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंसेज, इट हैपेंड। बट या इट्स द नेचर ऑफ द लेंसेज, एनी लेंसेज, ये लेंस का नेचर है, वो होगा ही होगा, कोई भी लेंस लगाएंगे, किसी में कम, समवन किसी में ज्यादा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर कंपनीज। Okay, so in barrel distortion, is there any confusion? Chaliye. So let's start with the pin cushion. As I told you earlier, it's just the opposite of like barrel distortion. So क्या होगा इसमें? Pin cushion distortion is the exact opposite of barrel distortion. Straight lines are curved outward from the center. This type of distortion is commonly seen on telephoto lens, and it occurs due to image magnification increase towards the edge of the frame. From the optical axis, this time the field of view is smaller than the size of the image sensor and thus need to be stretched to fit. As a result, a straight line appears to be pulled upward in the corners. आज ये इसकी इमेज पे now see, अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू टेलीफोटो लेंसेज फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया,
आपको सेंसर के फील्ड ऑफ व्यू से मैच करना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना होगा उसे, वो क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एज। तो वो क्या करेगा, सेंटर से नहीं कॉर्नर से खींचना स्टार्ट करेगा। और यहाँ जो आप लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स जो है कर रहे हैं दोनों साइड के, नीचे के भी ऊपर के भी। द रीजन ऊपर नीचे कम है, राइट। अब साइड के देखेंगे ये ज्यादा है। दिख रहा है ये आपको? यस सर। उसका रीजन क्या, आपको ऊपर ऊपर के तो आप 2 ही दिखा रहे हो इसमें, राइट। नीचे के 4 क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंसर इज, सेंसर का साइज क्या होता है, सेंसर का साइज क्या होता है बताओ? रेक्टेंगुलर। rectangle. रेक्टेंगुलर। सो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर में क्या हो रहा है, सपोज पर 36/24, क्या हुआ ये एस्पेक्ट रेशियो क्या हो गया? एस्पेक्ट रेशियो की सेंसर साइज 35 mm हो गया। That नहीं is- नहीं नहीं, 35 mm is diameter of those things. Look, they are using word 35 mm ना। Things is that 35 mm का रोल होता था, the width of the gaze called 35 mm, but that 35 mm also have the certain aspect ratio. It means image have the width and height ना, there is a 24 images, और video have the certain aspect ratio, that is like अभी जो आपका APS-C का है ना सेंसर, that the 16.2 by 15.9 or something, दैट्स द 35 mm फ्रेम फिल्म का जो था वो डायमेंशन था, राइट। सो यहाँ एस्पेक्ट रेशियो क्या हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो टू बाई गया थ्री 2:3:5:1। 3/2। 3/2 अच्छा। थ्री हाँ बाई थ्री टू बाई टू अब 3/2 क्या होता है, 3/2 से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या किया, डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 1.5। इसका मतलब 1.5 क्या होगा, आप रेशियो देखते हैं ना, 1.5:1। जो आपका सेंसर है दैट इज 1.5:1। It means your sensor width is 1.5 times bigger than your sensor height, है ना। That's the things। आपका निकाल सकते हैं इसे, 1.5 निकल रहा है, 1:1.5, सॉरी 1.5:1, ये यस निकल सर। रहा है ना। यस सर। तो आपका जो सेंसर साइज है बेसिकली वो इतना बड़ा है, तो क्या हो गया, आपका विड्थ ज्यादा बड़ा है और हाइट जो है वो कम है, तो कम वाले में ज्यादा चीजें पकड़ में आएंगी ना। कम वाले का एंगल तो ज्यादा वो होगा, फील्ड ऑफ यस व्यू सर। इस साइड जो है वो ज्यादा हो रहा है। यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, कल किसी ने पूछा था वीडियो में जाके वो क्रॉप हो जाता है। समवन आस्क्ड दैट क्वेश्चन ना यस कि सर। यार वन फोर हाँ के वो हो। 4K में क्रॉप करता है। अब मैं बता देता हूँ द रीजन क्या होता है। द रीजन इज, वन सेकंड आदित्य। Yeah, the things is that how to calculate aspect ratio. You have 2 dimension basically, right? So you know that your sensor size is, your sensor is 36 is width, 24 is height, right? So if you calculate it, aspect ratio can nikal raha hai, aspect ratio is 1.5. It means 1 point, your width is 1.5 times bigger than your height. So any kind of what the distortion has happened. So there is a less area in height size, right? So that area will affect more because in width size
Sorry guys, there was network issue. No, I just fixed it. So this PPT is visible. Yes, sir. Okay. So there was, yeah. So things is like that. Suppose for an example, as I told you earlier, once you are in photos mode, वही होता है once you shift it to 4K or full HD or any kind of the settings on which you want to record, you feel that your sensor is getting cropped, right? Why it's happened and what the reason is. Suppose for an example, your sensor is 36 by 24. It means what? It means that your sensor is 1.5 times, your sensor width is 1.5 times bigger than your height. Now, you are recording full HD video, full HD, right? What's the size of full HD video? Full HD क्या होता है? 9020 by 1080? 1080. Right? Aspect Yes, ratio sir. is 1920, 1080. 16 by 9. 16 by 9. 16 by 9, right? Yes. Now 16 को divide करो 9 से. 1.77. 1.77, right? Now write down these things, guys. Now your sensor width is 1.5 times bigger. Your sensor aspect ratio is 1.5 times bigger. Now you wanted to record a video which width is 1.77 times bigger, right? Now what your sensor have to do? क्या करेगा sensor? To fix it, height को कम कर देगा, width अपने आप बड़ा हो जाएगा. If you cut down the height, width become bigger. If you cut down the height, width become bigger or not? Yes, sir. Automatically, because you can't Yes, sir. increase the sensor size. You cannot increase it, right? So things is that if you crop the height, automatically your width become bigger. हो जाता है? Yes, sir. होता है या नहीं होता है? Anyone have confusion? मैं फिर से इसे explain कर दूं. हाँ सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे को Your वापस। sensor is, suppose your sensor is 1.5 times bigger. It's very simple, right? For an example, यहाँ देख लो the pincushion वाले part को. See, your sensor is 1.5 times bigger. Now, from the calculation, now your video's width is 1.7 times bigger, right? Your video का जो width है, that is 1.7 times bigger than their height, और your sensor have 1.5 times bigger width than the height, right? तो क्या करना होगा? Either to produce the same size, you need bit bigger sensor. That sensor, you need the sensor which have the aspect ratio 16 by 9. You need a same sensor which have the aspect ratio is that the 1.7077. If you don't have that, you can't stretch the sensor. What you need to do it? If you cut the top, right? If you cut that is, अगर तुम height को cut करते, if you cut the height, what happened? Automatically your sensor become bigger. आपके sensor का जो width है, that width become bigger. हो जाएगा? अगर तुम you just cut the height, width हाइट automatically के बड़ा होगा ना? कंपैरिजन, मतलब हाइट के कंपैरिजन में that's बड़ा होगा, एक्चुअल तो मतलब उतना ही है. नहीं, aspect ratio तो वही है ना? The aspect ratio to get the same aspect. That's the reason when you shifted on 4K or something else, you feel that crop is vertically crop होता है और horizontal होता है. That cropping is vertical or horizontal? हॉरिजॉन्टल क्रॉप होता है. Horizontal, ना? Vertical होता है, no? So why horizontal crop? Because they wanted to decrease the height. They want to cut the height. Height जैसे ही कम हुआ, you will got the exact aspect ratio. Height जैसे ही cut हुआ, it's become 16 by 9, ना? Height जैसे ही कम हो, 4:3 is become 16 by 9. हो जाएगा? Physically cut नहीं करता, physically नहीं cut करता, but to get that same aspect ratio as your video have, right? For an example, look. Your camera have, you guys have the still cameras, right? Yes, sir. There's a many mode in your camera. मैंने So once you are switched on the 4:3, what happened? You feel that the vertical lines is over there. आता है? Now the 16:9, 1 by 1, 1:1. There's a many aspect ratio of your images is there, right? So just like that, होता है ना? बहुत सारे आपके aspect ratio होते हैं ना in still photography.
हाँ सर, So वो just सर वर्टिकल कट करता है ना, सॉरी मैं शायद गलत बोला था ना, मतलब वो वर्टिकल ऊपर नीचे से वो कट करता है ना एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए। that is 4:3 ना, that is 4:3. That's not cutting your sensor basically. वो आपको aspect ratio दे रहा है वो. But see the aspect ratio is 4:3 in portrait mode. आप क्या कहते हैं, दूसरे मोड पे जाओगे 1:1 का अलग है, उसमें बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, 1:1 ही दिखाता है आपको. बट वीडियो में क्या है, टू गेट इट टू रिकॉर्डेड इट, राइट, आपको अलग से नहीं देगा ना फ्रेम साइड साइड से निकाल के. यू विल नॉट गेट दैट वन ना. 4:3 पे करते हो, साइड में दिखाता है, बार्स दिखाते हैं ना आपको, राइट. बट इसमें क्या हो रहा है इन वीडियो मोड, नाउ हियर इज कि ऑलरेडी योर सेंसर वाज नॉट 4:3, आपका सेंसर 1.5 है, एंड द वीडियो दैट यू वांटेड टू रिकॉर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेंसर इज aspect ratio is 1.77. दैट्स द रीजन वो क्या करते, थोड़ा सा ऊपर से कट कर देगा. वर्टिकल कट करने से तो और छोटा होगा ना. इफ यू कट इट वर्टिकल, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बिकम मोर स्मॉलर ना. सो दैट्स द रीजन, वर्टिकल जैसे ही कट होगा योर हॉरिजॉन्टल लाइन बिकम बिगर, है ना. दैट्स द थिंग्स. सो हम यहाँ पर थे कि सेंसर में क्या हो रहा है कि सॉरी, पिनकुशन डिस्टॉर्शन इट इज. इसमें क्या हो रहा है, लाइन को खींच रहा है बेसिकली. फिर दिस वन, it's very simple, yeah. Just like घर में कुशन देखा है, you guys have seen the cushion, no? कुशन का शेप कुछ ऐसा होता है Yes, sir. सेंटर से. just like that, if you feel the same images over there, it means this is the pin cushion distortion, जो लाइन को बाहर की तरफ खींचेगा, that's a pin cushion, and it will happen with the telephoto lenses only. So barrel distortion का opposite, that is telephoto lenses. So just remember it. In wide angle lenses, there is a barrel distortion. In telephoto, there is a pin cushion distortion. बहुत पहले एक और डिस्टॉर्शन होता, दैट्स कॉल्ड द मुस्टैच डिस्टॉर्शन, बट नाउअडेज इट्स नॉट हैपनिंग. इट्स हैपनिंग विद द लेंसेज which lens have the both distortion as well as the barrel as well as the pin cushion distortion. That's called the mustache distortion, right? That lenses अब वो क्या होता था, that the जो बहुत tele lenses होते थे, wide to tele lenses होते थे, like 18-200 or that kind of lenses, previous lenses. So that lens have the as well as barrel as well as pin cushion. So उस वाले डिस्टॉर्शन को कहते थे मुस्टैच डिस्टॉर्शन. बट अब नहीं होते, इट्स मिनिमाइज. अब किसी भी ऑप्टिक्स में ये नहीं होता, इट्स टोटली एडवांस. सो ओनली देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन, वन इज बैरल, अनदर इज पिन कुशन डिस्टॉर्शन. जो पिन कुशन का मेरे पास वो नहीं है. सो गाइस कैन सर्च इट ऑन गूगल, द पिन कुशन डिस्टॉर्शन इमेजेस. सर एक क्वेश्चन है हाँ बताइए. कि ये जो हमारे नॉर्मल लेंसेज हैं जो स्फेरिकल हैं, इसमें ये स्फेरिकल डिस्टॉर्शन और ये पिनकुशन डिस्टॉर्शन, स्फेरिकल नहीं. सॉरी दी बैरल डिस्टॉर्शन, सॉरी, हम्म. जो बैरल डिस्टॉर्शन है, बट मतलब आई नेवर यूज दैट, जो अपने एनामॉर्फिक लेंसेज हैं उसमें ये नहीं होता होगा, आई गेस कि होता है, बिकॉज कोई दी। भी, मैंने क्या कहा, कोई भी ऑप्टिक्स होगा दुनिया का, सब में होगा. अच्छा, कोई भी ऑप्टिक्स होगा, सबका होगा, ओके ओके, है ना. आपको नहीं पता है, आपके ग्लासेस लगाते हैं, उसमें भी होता है. सी द एजेस ऑफ द ग्लासेस. यस सर, कोई चीप क्वालिटी का जो ग्लासेस होते हैं, दैट द आप उसके कॉर्नर्स देखो, है ना. ओके सर. वन सेकेंड. वन सेकेंड गाइस. So I got, I think 4 or 5% have sent me the mail of the photograph. So I think we have times, let's discuss it. One more thing, then for the next time, guys, just not only send the mail, you can rename your image with your name or give some watermark or something else. So when once I downloaded it and got to know that कि किसका image है, so for the next time, just rename your images, because the many person sending and I'm keep downloading it, it's getting confused basically.
Who have clicked this image? It's me, Navya. Navya. So there's two images that you have captured, right? No, the first one is only mine. Oh, first one is your man. So by default, yeah, that's the reason I told you, no? Okay, just Yeah. rename your image's name. So I got that one. Guys, the first things was explaining the photograph or composition. Remember one thing, this kind of photograph, if you captured anything, any scene or photograph anything, just remember one thing, always. There should be living elements in your frame. Always there should be living elements on your frame. Either your composition is कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, but you will not get that kind of feel. In this image, what you feel, it's kind of scenery that you are feeling, right? Because there is no living elements. Living elements से क्या होता है? There is a life, right? Living elements doesn't mean that the only आपके कोई characters होंगे. It could be the birds, right? Animals, कुछ भी हो सकता है. Human beings. So अगर ये कोई भी living elements is within your frame, right? और कोई activity हो रही है, so that's look great for the photography purpose basically, because there is a certain story. अभी इसमें कोई स्टोरी नहीं हो सकता ना इतना ज्यादा. It's look like scenery, right? So for the next time, Yeah. whenever you are capturing anything in composition, try to capture a life, or it means there should be living elements. ये composition ठीक हो सकता है in terms of contrast, green है इधर brown है, वो ठीक हो सकता है for the scenery purpose, right? For the balancing purpose. But for me, अगर आप capture कर रहे हो तो यहाँ पर living elements होने चाहिए. You capture this one? नहीं भेजे. ये किसका है? गाइस जिसका हो बता देना. This one? तीन image well, that guy is not there. Once. ये किसका है? This Sagar South. सागर. The सागर. Yeah, this image is well composed basically. ये इमेज आपका कंपोज अच्छा है इन टर्म्स ऑफ. अभी आप क्योंकि उसकी बात नहीं करते हम अभी, मैंने कल बताया भी नहीं था, राइट? When we are talking about the good photograph, right, there is three things. Always there is three things. First is your composition, ये आपका फ्रेम जो है कंपोज होना चाहिए. सेकंड इज योर एक्सपोजर, कि ये प्रॉपरली एक्सपोज होना चाहिए. थर्ड इज योर फोकस, कि प्रॉपरली फोकस होना चाहिए. देन नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं होता. ओके, अभी इसमें क्या है, आपके कंपोजिशन सही है, थोड़े से पोस्चर्स या आपको एंगल थोड़ा सा और ढूंढना था. कि अभी क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड इन दिस इमेज इज सेकंड हैंड इज नॉट विजिबल प्रॉपरली. द सेकंड हैंड इज ओवरलैपिंग, राइट? हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना. सो ट्राई, और यू हैव टू वेट फॉर द फ्यू मोर सेकंड्स, जब वो अपना हैंड थोड़ा और डाउन करती, सो दैट टू हैंड इज विजिबल बेसिकली, राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट दोज इमेजेस, और थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज. अगर दोनों हाथ दिखता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ इट विल बी, ये क्या डिफरेंस होता है दोनों. अभी क्या लग रहा है, सिंगल हैंड से हो रहा है, यही लग रहा है ना. बट अगर दोनों हैंड दिखते तो आपका इमेज और अच्छा होता है. दैट्स यू यूज द रूल ऑफ थर्ड, दैट्स ओके, वो भी सही लग रहा है. सो इट्स अ गुड इमेज. या ये भी अच्छा है, बट द थिंग्स इज अभी आपने क्रॉप कर दिया. यू नीड टू टेक होल स्ट्रक्चर. अभी ये ट्रायंगल इज लुकिंग गुड, द हैंड शेप जो है, द ट्रायंगल इज लुकिंग गुड. इवन द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन हिज फेस एंड Sir, मेकिंग it's ट्रायंगल mine, sir. शेप, इट्स योर. या इट्स अ नाइस इमेज. यू So, यूज sir, actually, जो फोन का रेशियो ही था वो पहले से 4:3 पे सेट था, तो ये क्रॉप नहीं है एक्चुअली. so you have to get it little bit wider, no? What I am trying to say is, then you get the whole structure of body. दो ट्रायंगल मिलते, शोल्डर से लेके बैक तक का वन ट्रायंगल, राइट? Yes, sir. और फिर देन द हैंड का ट्रायंगल, देन फेस पे जो लाइट आ रही है, द नोज एंड द लाइट इज फॉलिंग ऑन द फेस, दैट्स आल्सो मेकिंग सम ट्रायंगल. दिस इज अ नाइस फोटोग्राफ. But don't get used to it to click your photograph in monochrome. It's look artistic, but
ये तुम्हें एक ही जगह स्टक कर दे, will stuck at the one point. You feel like, yeah, that's a nice photograph. Try to capture in colors. Then in post, if you need, right, then capture it. Always there is certain reason to capture black and white or monochrome. Don't get ये बहुत अच्छा लग रहा है, capture कर लेते हैं. Just ask yourself why you need it in black and white. Before capturing, just ask yourself why you need black and white or monochrome. Right? राइट सर, सो इसके पीछे स्टोरी थी, तो ये पर्पसली मैंने ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, तो what was the story? So, बताइए, what was the story? सो सर इसके, ये मेरे दादा हैं, तो इसके पीछे स्टोरी ये थी कि एक्चुअली इनको अल्जाइमर हो चुका है, तो वो स्टेज मुझे दिखाने के लिए थोड़ा इजी रहता कि कैसे लाइट उन पे पड़ रही है, तो बस वही पार्ट बचा है कि वो उनको थोड़ा बहुत याद रहता है, एंड द डार्क पार्ट इज जो भूल चुके हैं वो। सो दैट्स द स्टोरी। That's great. अच्छा, बढ़िया. अब बट हुआ क्या है, योर इमेज इज ना, थिंग्स इज दैट अगर लाइट है चीजें, इट्स लुक वेरी क्लस्ट्रोफोबिक. जो क्रॉप किया है, तुम क्रॉप नहीं किया है, बट इट मस्ट बी बिट वाइडर. ये इतनी इमेज, वन सेकंड, या दिस वन इज आल्सो। दिस वन, दैट द अपर वन, राइट? यस यस। Now see, what I'm talking about in previously, that the वो जो अर्ग वाला image था, right? I'm talking about that things. Now see, in this image, postures of every hand, legs, everything is visible, right? Now think about it. If that the left hand is covering the face or something is one eyes, what happened? Do you feel that image look that much of promising? If that hand is just overlap one eye, just slightly, just think about it. So there is a certain room, right, in your images. So that's the reason ये image आपका अच्छा लग रहा है. अगर एक भी जेस्चर में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अगर वो हैंड आई को ओवरलैप करता, फिर वो शेप और द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली, राइट? सो अभी इसमें सारी चीजें आ रही है. वन मोर थिंग इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ इज, once we are capturing any photograph, right, because it's a static, it's still images. So how to make it dynamic, basically, how to make it dynamic. So this is the example of dynamic images. So there should be some movement. वो मूवमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, बट देयर इज सर्टेन मूवमेंट कि कुछ हैंड का जेस्चर है, बॉडी का जेस्चर है, आई का जेस्चर है. सो देयर विल बी समथिंग विद इन योर फ्रेम, सो दैट विल नॉट लुक वेरी स्टैटिक, दैट लुक डायनामिक. जो डायनामिक आपके इमेज में दिख रहा है, एंड अगेन यू कैप्चर इन द रूल ऑफ थर्ड. So that's great. But when you are running and taking low angle, right? Now see, there's a less space on headroom. You need bit more space. Once you are taking head to toe shot and low angle, there will be more space on headroom. अभी क्या हो रहा है, हैंड जस्ट लग रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है. This image. This is mine again, Navya. Again, Okay. Navya, the same thing happened. अभी मैंने ऊपर वाले इमेज में I just discussed कि whole postures is visible. In this one only face is visible. Legs नहीं है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है. तो either you can get closer to it, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखा देते. कोई पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, स्ट्रक्चर दिख रहा है? No. नहीं दिख रहा है. No. One more thing in this image is your center of interest is dog, right? Yeah. In every photograph, once you are photographing anything, there should be the center of interest, right? That's your main character. Anything it could be. Here, what happens? See in the background, how much clutter is in your background. Now, if anyone is watching this image, clearly they notice there's many things in the background. It means our center of interest is getting towards that clutter, right? So your center of interest is not cleared over here. बहुत ज्यादा बज है पीछे, right? Yeah. बहुत सारी चीजें. Try to avoid clutter once you are composing anything. जो भी क्लटर है उसको खत्म. कभी क्या हो रहा है, ग्रीन ग्रीन है बहुत ज्यादा. सो थ्रू योर आई, जस्ट डोंट गेट इट लाइक दैट कि यार अच्छा है क्या है नहीं है. जस्ट थिंक लाइक दैट, इज दैट ग्रीन इज dominating or not in your frame? Is that green or whatever in clutter is in background, is it dominating or your frame or not? Yes. And also it's unwanted, Yes. right? Yes. So for the next time, also it's not only about the center of interest, it's also about the background. कि बैकग्राउंड कितना कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, राइट? Now this one. Yeah, this is mine again.
So you have sent 3 images. In terms of contrast and colors, good. But again, I'm telling you, there should be human elements, right? So when there will be living elements, basically, are you able to tell a story, right? Are you able to convey the story? And easily you can convey. इसमें तुम convey कर सकते हो painting point of view, anything else, but that is easy to explain. And for the FTI preparation, what I'm trying to tell you guys, try to explain your own photograph. Try to create a photo story within 2 or 3 or 4 photographs. Try to create the story. So what happened? You will learn how to explain the frames, how to explain a particular visuals. So अपने visuals के बारे में explain करो. तभी बाकी बाद में जाके then rest of the image or rest of the films you can explain. So whatever you captured, ask yourself what is behind this images. So it could be the very simple photo story, right? It's very simple story. कोई चाय पी रहा है, someone is smoking cigarette or something else, right? So try to create a photo story, you know. So you will learn how to explain it, right? So that's the one reason always I'm keep telling one thing, कि try to capture that life, basically, है ना? कोई भी living elements होगा उसमें life होगी, right? So basically 2 image हमारे छूट गए थे. Aditya, your image was it, right? Are you listening? Aditya? Okay. This one. This composition, there's a much more things in foreground. You can crop it bit, right? And also your camera is not balanced properly, I think. And the left-hand side, see this area. अगर cake ही दिखा, you wanted to shoot the cake, it should be proper cake. So that the right side corners, you can crop it properly. That highlight that is falling on the character is good. That kicker is making over there, right? So that's create a certain shape of your characters. In terms of color also, the background and whatever the costume, it is blue and red, right? That's giving the complement, and that the highlights and whatever the pattern that is falling over here. So you need to get it closer so you can highlight it more, the shadows areas, right? You can capture in detail, because I think 20% of area is in foreground. You didn't need it, and it's also out of focus. So if you get it more closer to it, you will get detail of it. Sorry. Again, this one you are playing with colors, that the highlights and shadows. That idea is good. You are playing with highlights and shadows. But again, I'm telling you, there must be, because we are preparing for something, some competition, whether you have to explain your frames and your photographs. So in sum up, that's what wanted to tell you. There must be living elements. So you can convey your story, you can explain it properly. Now the composition is good. In terms of if you ask me about the compositions, that's good. You just played with the lights. That's also good. But abhi isme kya hai, there's no that kind of a story at all. You know? Okay. So I think by 4:30 I have got only these images, and after that, if someone have sent it to me, I was unable to download it, as I told you earlier, guys. So maybe if someone send me after 4:30 in next class, I will discuss it. So no worries for it. I will definitely I will discuss. That much of, sorry. Oh, it's at 15.
Okay, guys, let's connect after 10 minutes. Let's take a short break. Right. In 10 minutes, I will just resume the class. Okay, sir. सागर, ये आपके परमिशन कैसे चला गया? WhatsApp. ये तुम्हारे पास you are becoming host of this program. हाँ सर, पता नहीं कैसे हुआ। I don't know how it's happened. Do one thing, Sagar. Can you go on the more? ये मोर पे जाना और रिकॉर्ड का ऑप्शन ना, ठीक है, रिकॉर्ड टू क्लॉड पे जाना जरा, अभी अभी नहीं, वंस आई स्टार्टेड। हेलो, हाँ सर। अभी जब 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले याद दिला देना आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परमिशन पता नहीं आपको कैसे चला गया ना, आई एम अनेबल टू स्विच इट। अब करूंगा तो कहीं किसी और को चला जाएगा। तो आप मोर पे अभी एक बार जाना, आप मोर पे क्लिक करना। किया सर। उसमें आया हुआ है रिकॉर्ड ऑन क्लॉड। मोर पे क्लिक करो, रिकॉर्ड ऑन क्लॉड आएगा कुछ। पॉज अरे रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्ड ऑन, पॉज रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब। ओके, पॉज इट, नॉट रिकॉर्डिंग। अभी क्या, अभी पॉज हुआ है? Not that, maybe that's why it's happening. Yes. The PPT is visible to everyone. Yes, sir. Okay, it's great. So here, as I told you yesterday, to compose. So I just wanted to know that how much you guys have idea about the composition. So जिसने भी भेजा, everyone have the basic sense of composition. So from today onward, after every classes, I'll give you certain topics on which you guys can photographs. So we'll started with the basic composition things.
So that's the reason here. There's a few rules, there are many rules. So here I will discuss on the few rules that what it is. Simplicity for me, it's not the rule, but I use this word. Why is this word is? There's no like rule of third is rule. You can search it, but the simplicity is not the rule basically. But why I use this word later on, I will discuss on it. Rule of third: line, balance, framing, mergers. Show images. Now look at these images, right? In this image, there's a three things: telephone, bridge, and cactus. Now, according to photograph, or according to photographer, or being a viewers, what is the center of interest of this image? You guys have answer? What is center of interest of this image? The cactus, the telephoto, the Cactus. bridge. Cactus is Telephone. center of interest. Telephoto, telephone. Or anyone have anything? There's a bridge also. No, it doesn't feel like there is a single element, like one center of focus. Yeah, that's what I'm asking is key. Someone have told cactus, you told telephone, then you think that it's not like the single elements. So in your composition, always there will be center of interest. कोई इमेज उठा के देख लो, कोई भी अच्छी इमेज है उसमें सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है. It means the something, there will be many things, but there is something that as in photographer, you are giving importance to that character, right? If you are photographing anything, as a guy, or you just release the set and whatever comes to your frame, that's okay. If there is a many things, but maybe somehow there is a something that will become your center of interest. But here is everything have their own importance. So that's the reason. Firstly, someone told that the telephone, another told the bridge. The reason it's not clear, basically, it's not simple. So that's the one reason I use that word. Simplicity is make it very simple, very clear. Whatever you're gonna taking the images, जो भी compose करने जा रहे हो, it's very simple, it's very clear. Simple means it's very clear. You just convey your message, what you wanted to capture, what you wanted to show. There is a lots of confusion in this image, so that's the reason it's not simple. Now say this one. अब क्या हो रहा है? Is it simple? Now maybe it's the as in cactus is my center of interest. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, yes. अगर टेलीफोन बूथ होता था, टेलीफोन booth, there will be no cactus in the background. Background cactus हो सकता, but there are lots of elements, bridge and many things is over there. That's not clear. See eagle first one and see second one. The same bird, same position. What happened? There's a many things in the background because already it's a very close frame. And then now you are getting my point. जो आपका dog वाला image था, why I'm telling these things. Have you seen the difference? Just changing the slightly angle. Yes, sir. The background is looking too busy, right? So क्या हो रहा है अभी? Your center of interest जो eagle है वो left वाला और right वाला, which one is looking much better? As an audience, at the first time, if you're seeing those images, किसको कहोगे नहीं अच्छा है? The right Whole one body where is- there is no much The right one is the disturbance. better. The reason, the structure, the background is very clear, right? So that's the simplicity. This is not the composition rule, but always try to make it very simple once you are composing any images. That's
That's the things. See both images. See this image, left one and the right one. Which one is more clear? The right one. Right one. The reason the left one have the car, so that's the unnecessary things. Maybe if as in अब यहाँ ये question हो सकता है. If you have to show that the parking lot, right? Then it should be bigger. So there is a many cars, दोनों cars दिखते कम से कम बाकी cars भी दिखते. So now your center of interest is there is a church and behind that there is a parking lot, right? अभी कुछ ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा ना? Not like that. Maybe that will be the good composition. But अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? It's not visible properly. थोड़ा सा area आ रहा है, the bit area is coming and there is a that is in basically that is in foreground or काफी disturbing foreground. So that's the reason we go with the second one because it's a clear. So basically it's not the composition rule. It's look very simple. The same things, there's a disturbing elements जो right hand side में आ रहा है. If you crop it, simple हो जाएगा. One second. No, what I'm talking about. So in this one, what happened? It's look like dynamic, right? The reason, the two things. It's not totally balanced. कि बिल्कुल center में center image क्या होता है? It's look too static. If your character will be in center, it's look too static, right? In this image, you can feel the moment. It's look like he's just sketching something. Moment लग रहा है. जरूर नहीं कि वो motion blur या कुछ दिखेगा, but you feel that something is happening over there, right? ये feel हो रहा है ना कुछ चल रहा है. So that's the dynamicness because you are not capturing videos. So it's a still image, but at least you feel there is something that is happening, right? So, and also there is shadows that is filling those foreground area. If there will no shadows, it frame look unbalanced. Just think about it. If there is no shadows, what happened? The foreground, look, this 30 or 40% area, right? Is called foreground, this area. जहां तक shadows है. So what happened if there is no shadows? The foreground look too empty. That look unbalanced. No, this frame is looking balanced. ये frame balance दिख रहा है? Yes, sir. Yeah. So one thing, always remember one thing. It's important to know that what should be inside the frame or within the frame. But it's more important that what should be not. Right? It's more important than that. कि what should be not inside your frame. क्या नहीं होना चाहिए, that is more important. क्या होना चाहिए, that's okay. This is my composition, is the thing, right? So ये जानना भी बहुत जरूरी है. It's more important that what should be not within the frame or inside the frame. One more thing I'm just trying to explain. Once you are capturing your images through your camera or phone, don't zoom in. Try to capture as much as possible wide because once you are capturing the wide angle, right? There's a many things to compose. Then the real struggle started. How to compose it. Once you zoom in, as in being a portrait photographer और वो क्या करते हैं जो portrait ही करते हैं ना, that's a candid. Basically, candid is not photography at all. It's totally depend upon the characters because if you capture someone's 200 or 400 pics, maybe somehow, somewhere the 10 or 15 photograph will comes good. The reason? They totally depend upon the character, subject. वो कहीं ना कहीं अपने expression अच्छा दे देगा बात करने में या कुछ करने में.
but you don't have the things. तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं face और इसके अलावा. So portrait is not the photography. So once you wanted to learn photography, try to capture as much as possible. Why? I'm not talking about कि fisheye lens लेके आ जाओ, but there is a certain areas that you need to compose. कि आपको compose करना पड़े, आपको hunt करना पड़े. There is a certain process to photograph. You have to keep hunting for it. What will be the good frame, from where it could be good. So lensing is more important. So try to capture. If you wanted to learn, try to capture on wider. It doesn't mean that wider lenses on your phone also. Don't zoom in. Right? Whatever the wider area you are getting, that's just capture on it. So ज्यादा element होगा, the more element, the more struggle, और आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा. Now, what I'm talking about, the center image, right? See, in this center image, look more static. Is it feeling like that or not? The centered image is more static, more balanced. So rhythm nahi hota, ya movement nahi pata chalta. It's look very static. In the second one, just let's see. So that's the reason rule of third comes. Now this one, the center, the same image. Is there any difference in previous one and this one? Yes, sir. This one look more dynamic, more interesting, right? Because the previous one is too centered image. This is quite boring. This one. Now here comes the rule of third. What is rule of third is? Rule of third is there will be two vertical and two horizontal line. And according to rule of third rule, it's saying that you need to compose your characters, your subject on intersection lines. So how many intersection line will be there? There will be 4 intersection line, right? 1, 2, 3, 4. So if you place your subject on intersection line, a nearby intersection line, what happened? The simply you will get everything, the balanced image. You will get looking space, you will get headroom, you will get negative space. तीन चीजें होती हैं. The headroom above the character, that is headroom. Looking space where the character is looking, that is looking space. Negative space जिस area back का जो area होता है, that is negative space. हम that negative space I was talking about, that the previous image in which I just forget his name, who captured the grandfather pictures, right? So I was talking about that negative space should be there, है ना? वो इतना claustrophobic फिर नहीं लगता. The same thing with the headroom also. It's not too chopped unless you are not taking the close-up shot or extreme close-up, but you are composing the elements at that point of time. If you do not know anything about the composition, if you know the rule of third, just place your character on intersection line, you will get a perfect image in terms of composition, not in terms of exposure or anything. So in terms of composition, your composition will be perfect. So that's the basic rule for rule of photography. Abhi wo center mein tha, that's look very dull. Now it's on the intersection line. What happened? Now you can see it's look more dynamic than the previous one. See this one. Again, if it will be in center, it's look very static. Same thing. Same thing. Sorry. Now see, in this one, what happened? This image and this image. Which one look more interesting? Second one.
Second one. The reason is there is a more space when the character is running. So it's just a very psychological things, no? बहुत psychological है ना. It's look like now it's about to end, right? In this frame, it's look like it's just about to end. But in previous, you feel that energy, right? And this one, what happened? You can see that the looking space. In this one, there's a more negative space in this one. Look, these are the basic composition rules. In photography, it's called, in photography, there's a rule that there is a no rule basically, right? But to break all those rules, you have to know all rules basically. आपको सारा रूल पता होना चाहिए तभी आप तोड़ पाओगे. तो देयर इज नो रूल एट ऑल, बट ये ब्रेक हो सकता है. देयर इज सर्टेन रीजंस, सर्टेन कॉज कि ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है. बट देयर इज सर्टेन स्टोरी बिहाइंड इट कि कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसपे मैं ऐसा क्लिक कर सकता हूँ, अगेंस्ट द रूल ऑफ थर्ड जा सकता हूँ. This one. Then this one, no, there's a four intersection line that what I'm talking about. It didn't mean that anywhere you can place. So according to looking space, you can place on left or you can place in right. Now on the above or lower, where to put? चार है ना, दो lower है, दो upper है. So now for that things where it should be, right? So here is an example. So this image is according to rule of third on above part, right? This image is on this part. You can see. ये यहाँ था, ये बोट, राइट? कर्सर दिख रहा है मेरा? आर यू गाइस सीइंग दिस कर्सर? यस सर. अभी बोट कहाँ पर है? यहाँ है, राइट? यस सर. और इंटरसेक्शन लाइन पे. नाउ जस्ट सी टू इट. वो तो डल है, बिल्कुल सेंटर में है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड बिल्कुल परफेक्ट. बट सी द थर्ड वन. Carefully see these three images. 1, 2, 3. Centered, above, lower. Which image is looking more interesting? थर्ड वन. The Third one. third The one. reason? It's very simple. हमें reason नहीं भी पता. Just forget about the rule of third. But it's look perfect. If you compare these three images, why it's look perfect? Because there's ample amount of head space because it's very bigger. In first one, it's look too like dull. It's very balanced and centered. In second one, it's according to rule of third, but it's on above part, so it's look like the headroom is touching somewhere. But in third one, the perfectly on the second lower one intersection line, perfectly you can see there's a more running space, negative space, headroom, everything is there, right? So that's the reason. Even you don't know the rule of third, visually you can say that yeah, ये image अच्छा लग रहा है, this image is looking good, right? So that's the rule of third. And according to subject, you can place on four intersection line. It is necessary that I told you intersection line and you can place your subject on any line. No. You can see this one. See, just change a bit angle. This one is the center, right? After two adding, क्या हो रहा है? Second वाला दिख भी रहा है? See how dynamic second one looks by placing that things on rule of third. How dynamic that looks, right? So that's the difference in first one and second one. Second one look more dynamic because first one is overlapping. बहुत डल लग रहा है, इसमें दिख रहा है, एरिया भी दिख रहा है, लाइन दिख रहा है बेसिकली. सो दैट्स लुकिंग परफेक्ट. No.
No, the line. What is line is? Line is not the physical line will be there. It's very simple. If something that draw viewers' attention from foreground to background, वो जो relation create करता है, that's create a certain depth basically. So that's the line, right now. अभी इसमें line दिख रहा है, the pattern of light making a line. So basically there's a foreground to midground. The thing is that either on image जो भी आप click करते हो, whatever image that you are clicking, either taking the print out of it, or either you are watching on televisions, your mobile phone, anywhere, image is two-dimensional, right? Your sensor is two-dimensional, that is width and height. Is there depth in image? No. आपके इमेज में डेप्थ थोड़ी, आपके डिस्प्ले में डेप्थ है, आपके फोन में डेप्थ है, नहीं है ना. So basically you have to create illusion of depth by composing the frame. आप कहेंगे डेप्थ तो है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में डेप्थ दिख रहा है आपको? Have you seen the depth in passport size photograph? दिखता है? No. No, sir. नहीं दिखता ना. The reason is we have to create illusion of depth either by the lighting, by the composition. Anyhow, we have to create it because we are watching it, we are seeing it on two-dimensional things. So that illusion we need to create, and once the line, through the line, it will help you out how to create that dimension. Now you can see it. क्या हो रहा है? From foreground to background, as in viewers, what happened? You just travel with those things, right? कहीं पर डिस्ट्रैक्ट नहीं ना, फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड एट द वन लाइन, और आप सीधा पहुंच रहे हो फोरग्राउंड से उस कैरेक्टर तक, वो लाइन उस कैरेक्टर तक लेके जा रहा है जहां पर वो हाईलाइट, और दैट हाईलाइट इज फॉलोइंग ऑन द कैरेक्टर, सो देयर इज अ कैरेक्टर and that create a diagonal line. It's not the straight line. Diagonal line is more dynamic basically. Vertical, horizontal is good, but most of the time try to capture that the diagonal line, because diagonal create more depth. See that line, and that's make that line make a center of interest because there's a red t-shirt that boy is standing over there, sitting over there basically. Now see the line, how much depth you can see in this photograph. It's not look flat due to that line. See to it. See to it. Shape basically. Shape से क्या create? Basically through the shape you can create a rhythm too. Later on we'll discuss how you'll create rhythm in your composition. शेप क्रिएट करने से क्या हो रहा है कि सेपरेशन, यू कैन क्रिएट अ सर्टेन सेपरेशन. अब सपोज करो अगर ये डायगोनल शेप क्रिएट नहीं होता, or that lady is nearby, or either you just slightly left your camera, what happened that the first lady that is in foreground will overlap the second one, कर देता ना. So that diagonal line से क्या हो रहा है, every individual have the certain space, कोई कहीं पर overlap नहीं कर रहा है. Basically how you are creating a shape or rhythm, that's a very for the simple example I'm just telling you. Suppose you have to capture three persons within the scene. One is 6, two is 6, another is 5, right? How you compose it? Two person is 6 feet, another is 5 feet. How you compose it? Five-feet person will be in center, 6 will be in the left side, and 6 will be in the right side, right? It's a basic composition. ऐसा ही करोगे ना? Rather 6-6-5 करोगे, 6-5-6 ऐसे चलेगा ना, right? So that's create a certain shape and also create a rhythm basically. When we are talking about the balance, it means we are talking about the visual balance, right? Visual balance, you can balance your frame with many things. You can balance it through the size, through the shape, through the colors, through the positioning of characters. Suppose for an example, for the positioning, if one person is 6 feet, another is 5 feet, क्या करते हो? The 5 feet person will be come closer to the lens, 6 feet को थोड़ा पीछे कर देते हो. What you are doing? Basically you are balancing the frame, right?
If the 6 feet and 5 feet person will be on same axis, what happened? The 6 feet person look bigger. To balance it, what you need to do? Through the positioning, you balancing it. Suppose the very prominent color is this side, right? Another side, कुछ उसी color का ऐसे ही dominating colors that you wanted to use, so that make your fan frame balance. So positioning से हो सकता है, color से हो सकता है, shape से कर सकते हैं. So there's a many things through which you can balance your frame. So later on we'll discuss, especially on the balance chapter. So there is a symmetrical balance, asymmetrical balance. We'll discuss, but अभी मैं थोड़ा सा brief ही कर रहा हूँ. Quick balance. ये कुछ होता है. एक और चीज है, that's called the merger. Frame within the frame we'll discuss on later. There's a frame within the frame. That's another composition rule that create depth. I'm talking about this mergers. इसको on ये देखो. कई बार ऐसे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं ना. So try to avoid mergers कि बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीजें आ रही है जहां पर वो मर्ज हो रहा है चीजें, तो try to see कि ये चीजें ना हो. वही हो रहा है, that's a merger. कोई सेपरेशन नहीं लग रहा है, right? So now these are the basic composition rules. अभी हम डिटेल में नहीं गए. Now topic by topic we'll discuss on it. And जैसे मैंने कहा कि balance, on balance there will be symmetrical balance, asymmetrical balance. So there's a many things on which we will discuss later, but abhi basics that I have explained it to you. And for the next classes, you guys can capture on the topic of rule of third. We have started from there. The rule of third, 2 photograph only, and try to give caption to your photograph. Try to give caption, either the 1-liner or 2-liner, so you can explain your photograph a bit. Okay, when you are not when you are capturing, what is the meaning of these photographs, or give an caption, any caption. So hoga kya isse, at least you can learn writing about the frames, writing about the photographs. So that's it for today. If you guys have any questions, any query, you guys can ask me. If you have any. नहीं है? No, sir. So from tomorrow and today, everything is clear. कभी repeat किया था कल वाली चीजों को? Just revised it. Whatever I explained it to you yesterday, just revised it. क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं थी, but yeah, for the first time or maybe. So if you have any confusion, you guys can ask me. तो नहीं है, तो yeah. So and now everyone have my mail ID. Yes. Yes, sir. So anything that you wanted to ask, right? You guys can mail me. Right. Anything that you wanted to ask related to FTA or preparations, that you can ask me. Right. It's okay. So if you guys don't have any questions, so now Shubham, your name? Yes, sir. Just stop the meeting, no? Because you have that. Okay. So stop the meeting. Firstly, recording बंद कर देना.